Good evening, students. Today we are starting with the properties of gravitational forces. So, what are the quality of gravitational force? It is weakest force in our nature. It is attractive in nature. So, it is a force which is weakest. सबसे weak force होता है और nature it is attractive. Attractive means दूसरी bodies को अपनी तरफ attract करता है. It is directly proportional to the product of masses of the two bodies and inversely proportional to the square of separation between them. It doesn't require any medium. ऐसे कोई medium नहीं चाहिए, means it is applicable everywhere. Now the importance of law, the force that binds us to the earth. This force is very important because it binds us with the earth. Otherwise, we can fall here and there. The motion of the moon around earth, जो हमारा मून है वो मूव करता है अराउंड अर्थ, वो भी इसी फोर्स की वजह से. मोशन ऑफ प्लैनेट्स, जो अदर प्लैनेट्स हैं उनका सन के अराउंड मोशन भी इसी फोर्स की वजह से हो पाता है. टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन. टाइड्स जो होते हैं सी में आते हैं वो भी इसी फोर्स की वजह से आते हैं. मून एंड सन उसको अट्रैक्ट करते हैं वाटर को, इसकी वजह से टाइड्स आते हैं. नाउ द ग्रेविटी, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट lying on and near the surface. So gravity, it is defined as the force of attraction. Gravity is a type of force, attractive force between the earth. Here we are saying earth because our planet which we are staying is earth. In any object on the earth which is lying on earth or near its surface. This gravity क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है. किसके बीच में? अर्थ एंड अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो अर्थ की सरफेस के पास हो, उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी कहते हैं. सो अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप falls back to the surface of the earth due to the influence of force of gravity. कोई चीज़ अगर हम अपसाइड जो है वो थ्रो करते हैं तो दोबारा अर्थ की सरफेस की साइड आ जाती है इसी फोर्स की वजह से. That a body of mass m kept on the surface of earth of mass capital M and radius r, the force of gravity is equal to the force of attraction between the earth and that body. So this is the force between earth and the body, where mass of earth is capital M and the value of mass of the earth is 5.96 and 10 raised to the power 24 kg. The radius of the earth denoted by small r, and the value of the radius of earth is 6.37 10 raised to the power 6 meter. Now we are considering the mass of another body is small m, that is equals to 1 kg. So the force we can find is 9.8 Newton. This is the force of gravity. Hence earth attracts a body of mass 1 kg by a force of 9.8 Newton towards its center. जो हमने ये वैल्यू निकाली है फोर्स की, that is the force of gravity by which earth attracts any object towards its center. Now the next term is acceleration due to gravity.
To understand this, when we drop a body from some height, its velocity continuously increases. अगर हम किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो उसकी बॉडी की वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है, और जो उनका इसका इंक्रीजिंग रेट होता है दैट इज कांस्टेंट. इट मीन्स बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Due to the gravitational pull of the earth, this acceleration is produced, and so this acceleration doesn't depend on the mass of the falling body. और जो acceleration है, gravitational acceleration है, ये body के mass पे depend नहीं करता है. The uniform acceleration produced in a freely falling body under the gravitational pull of the earth is called the acceleration due to gravity, and it is represented by small g. And this value of g doesn't depend upon the mass of the body. The value of g depends upon the mass of the earth and its radius. g की वैल्यू बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन ये अर्थ के मास और रेडियस पे डिपेंड करती है. The value of g change from place to place. g की वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं अर्थ पे तो वो चेंज हो जाती है. क्यों चेंज हो जाती है? It is the reason that since earth is not a perfect sphere, so the radius of the earth increases from poles to the equator. जब हम पोल्स से इक्वेटर की साइड में जाते हैं तो हम इंक्रीमेंट देखते हैं अर्थ की रेडियस में. अगर अर्थ की रेडियस में इंक्रीमेंट होगा मीन्स इन दोनों की डिस्टेंस में इंक्रीज हो जाएगा. इसका मतलब द वैल्यू ऑफ जी बिकम ग्रेटर एट पोल्स. अर्थ के सेंटर से पोल्स का डिस्टेंस कम होता है, इसलिए जो जी की वैल्यू है वो पोल्स पे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है. द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस इज 9.8. जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे 9.8. दिस इज एक्सेलरेशन, सो इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द वैल्यू यूनिट of g. The value of g decreases due to height above the earth's surface or at depth below the earth's surface. g की वैल्यू अगर हम हाइट पे जाते जाते हैं अर्थ की सरफेस से तो भी डिक्रीज होती है, और अगर हम अर्थ की सरफेस में अंदर जाएंगे उसकी डेप्थ में जाएंगे तो भी डिक्रीज होगी. द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. और जी की वैल्यू अर्थ के सेंटर पर 0 होती है. Now the relation between small g and capital G. If we have a body of mass m dropped from a distance r from the center of the earth. अगर हम एक बॉडी जिसका मास m है और जो अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर हम उसे ऊपर से ड्रॉप करते हैं, then the force exerted by the earth on that body is given by F gmm over r square due to the universal law of gravitation. But now this force exerted by the earth produces acceleration in the body. जो अर्थ की वजह से ग्रेविटी है वो उस बॉडी पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, due to which the body moves downward by a force. Then we can also express this force as mass into acceleration. We can write it F is equals to mg. Now these two forces are same, so we can equate them. Gmm over r square is equals to mg. Small m is cancelled out, so we get small g is equals to gm over r square. It means we can find the value of small g by gm over r square, where g is universal constant, m is mass of the earth, and r is the radius of the earth. The value of g depends upon the value of mass and radius of the planet, any planet, or here we can say the earth. The value of g is 9.8 meter per second square. But to make our calculation easy in the numericals, we can use the value of g as 10 also.